इंदौर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक एवं ब्रिक्स के होम्योपैथिक प्रतिनिधि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने 5 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के ऐतिहासिक संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में आयोजित इंटरनेशनल पीस कॉन्क्लेव एवं लंदन अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस में विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। ब्रिटेन की ऐतिहासिक संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पीस काउंसिल द्वारा इंटरनेशनल पीस कॉन्क्लेव एवं लंदन अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस का प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्व भर से शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इंदौर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक एवं ब्रिक्स के होम्योपैथिक प्रतिनिधि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने होम्योपैथी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और अनुभव के माध्यम से नए आयाम स्थापित किए हैं और गंभीर एवं जटिल बीमारियों के सफल उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। Good evening, Namaste, and warm greetings to all esteemed dignitaries, respected delegates, and honorable members of the United Nations Global Peace Council and House of Lords, London. It is with immense pride and profound gratitude that I accept this honor today at House of Lords, being invited as a guest of honor at the United Nations Global Excellence Award, London, organized at House of Lords. It's not only a personal milestone, but a tribute to the path of healing that I have devoted my life to. A special and heartfelt thanks to Dr. Barkha Varsha, Chairperson of the United Nations Global Peace Council, for this recognition. Your belief in holistic, peaceful and integrated healthcare is deeply inspiring. I am Dr. Arpit Chopra Jain, founder of Arogya Super Specialty Modern Homeopathy Clinic, Indore, Madhya Pradesh from India, of having 2 decades of experience in revolutions of homeopathic medicines. My journey has been rooted in the vision to transform homeopathy into develop a globally respected, evidence-based and super specialty medicine and system which we are calling as super specialty modern homeopathy. Super specialty modern homeopathy. It may be one of the target to achieve as a future of homeopathy, which we are calling as super specialty modern homeopathy, and already we are working to and giving treatment from online system to 19 countries for critical and surgical patients like cancer stage 4, stage 5 of the kidney failure patients, comatose patient, hospitalized patient, surgical category patient, incurable category of the medical science like those cases, autoimmune disorders, and whatever the life-threatening diseases have been told incurable in the medical science, we are working on the same criteria, and I am proud to share that we have documented data of over and around 3,000 patients cured from the critical and chronic illness. This research and evidence-based system is transparently available on my official YouTube channel and our website, where real patients' journey testify to the power of Arogya Super Specialty Modern Homeopathy. Our next step of submit this verified data and treatment to the WHO, World Health Organization, and many medical platforms, many medical councils for recognition worldwide as a future of homeopathy by online submission and face-to-face handover and submission already under process and ongoing, with the goal of introducing a new era of scientific and globally acknowledged super specialty homeopathy from India, with the vision of complete, easy, safe, fast and cost-effective cure. In addition to this work, I have been already honored to serve as a homeopathic representative for BRICS countries and was recently confirmed the prestigious doctorate degree by the United States of America International University.
गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पीस काउंसिल द्वारा इंटरनेशनल पीस कॉन्क्लेव एवं लंदन अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में विश्व भर से शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।